और थोड़ा सा संभल के चलाना होगा इस पे। भाई इसका देखो क्यों डर लगता मेरे को, ये भागे जाता है यार। So before we start, I'm gonna show you something. So please don't be scared. Hello guys, how's everybody doing? I've been scrolling a lot of comments from my previous video, which was about the XUV 700 30,000 kms review. So I have a lot to talk about, especially about the concerns of the people who have asked me a lot of questions. So in this video, I'm gonna clear all those doubts. So stay tuned and do like the video and subscribe if you're new to the channel. Before we move further along in this video, guys, I want to let you know that, bottom line, that if you want this SUV, you have to compromise somewhere or the other. It's not that you're gonna get a whole package. So please don't be in that dilemma. This is not Creta, this is not Seltos. It's a big size SUV, especially by Mahindra, which means that it's built for safety. Safety comes with heavy materials. Heavy means a lot of strain in the engine while it's pulling, while it's accelerating, and strain means a lot of fuel consumption. So you have to understand that a big size SUV comes with its own perks of comfort and performance, but also compromises in its average. So before we start, I'm gonna show you something. So please don't be scared. So this is what the console looks like, guys. It's providing 6.8 kmpl, although if you ask me, it's providing even below that. But since my dad is driving this car these days, so obviously there's gonna be some driving differences, but around like what I had said in my previous video as well, it is providing 7 kmpl. For your own satisfaction and demonstration, today I'm gonna show you, this is almost half the tank. I'm gonna drive in normal conditions, not too slow, not too fast, city conditions, and also a bit of highway conditions. I'm gonna show it to you just by resetting. This is another hassle that I have to press the button right there, because in 2022 model there was no cruise control, so no cheating as well, that I have used cruise and gained more mileage. So I'm gonna show you the raw mileage of petrol manual variant, although this is 2022, so it's the same as 2025 when it comes to variant. यहाँ पे 8.6, अच्छा अभी 9.1 पॉप हो गया माइलेज. आई रीसेट इट एंड इट वाज कम्प्लीटली ब्लैंक. तो फर्स्ट माइलेज जो दिखाया था वो 7.2 था, फिर 8.6 हुआ, फिर 9.1 हुआ इन माइल्ड कंडीशंस, माइल्ड ट्रैफिक में. ये उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और स्पीड भी मेरा लगभग 30 से 50 में आई वाज गोइंग. तो एज यू कैन सी हम हैवी ट्रैफिक कंडीशंस में एंटर कर चुके हैं. यहाँ पे पिछला माइल्ड कंडीशन वाला माइलेज बता रहा है, दैट टू विच आई ड्रोव इन लाइक 30-40 kmh. अभी यहाँ देखते हैं, यहाँ पर लाइक 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक ट्रैफिक ही आएगा. सो हाउ इट्स गोना बी लाइक. अभी सेकंड पे आ गया है गियर हमारा. थर्ड पे डालने से तो तुरंत RPM फॉल हो जाता है एंड द कार शट्स इटसेल्फ ऑफ. हमारा फ्लाईओवर भी बन रहा है, ड्यू टू विच द रोड इज़ हाफ क्लोज्ड. मेरे को लगता है आई हैव डन अ मिस्टेक बाय कमिंग towards this road. मेरे को डोबो साइड से ही जाना चाहिए था. The amount of traffic this road has plus the construction is on. सारे लोग इधर उधर से भाग रहे हैं भाई. सो जैसे कि आप देख रहे हो, थोड़ा सा ही बिजी रोड मिला and how the mileage has been dropped and it will drop more. It's just that I have been driving very slowly, 30-40 के स्पीड में भी without any aggressive throttles, तो उस पे भी माइलेज 10 के आसपास है. So we have entered the NH guys, और यहाँ पे देख लो I am driving pretty casually. 70 आसपास स्पीड है मेरा. I am not too aggressive, not too स्लो. और ये माइलेज है इसका अराउंड 10, और यही एक्चुअल माइलेज है यार. आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज़ द फाइनल माइलेज ऑफ दिस कार. 10 पेट्रोल का. चाहे आप सिटी पे चलाओ तो थोड़ा गिरेगा, या हाईवे पे एक्सेलरेट करके चलाओ तो गिरेगा. अगर आप 70 पे 60 पे ऐसे चला रहे हो 4-5 गियर पे 2 RPM से नीचे, तो ही ये माइलेज 10-11 ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा. अदरवाइज नो, देयर इज़ नो चांस दैट इट कैन प्रोवाइड यू मोर माइलेज इन दिस पेट्रोल वेरिएंट. और अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो तो और कम ही मिलेगा आपको. मैनुअल में फिर भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है. सो दिस इज़ द फाइनल एफिशिएंसी विच XUV 700 पेट्रोल मैनुअल प्रोवाइड्स. थोड़ा और आगे खाली में जाने दो, आई विल शो यू थोड़ा थ्रॉटल करके भी
just to demonstrate that एक्चुअल में ये यू नो एग्रेसिवली अगर आप हाईवे पे 120 140 पे चलाते हो, क्योंकि लॉन्ग ट्रिप से ऑफन ज़रूरत पड़ता है, तो उन कंडीशंस में क्या प्रोवाइड करता है. तो इट इज़ रेनिंग मैन एंड इट्स थंडरिंग एज वेल. द रोड इज़ वेरी वेट. थोड़ा सा संभल के चलाना होगा इस पे, बट द वेदर इज़ वेरी ब्यूटिफुल राइट नाउ. So it's raining pretty heavily, guys, as you can see, and I can barely see the road. I'm just, you know, hoping for nobody to run into the road, man. It's not going to be good. Just paving my way carefully. You can see it's peak monsoon now in Jamshedpur. तो अभी बारिश थम चुका है यार. अभी I can get myself back to business. ये तो धीरे धीरे चला के काफ़ी अच्छा माइलेज दे दिया. अब इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं बिफोर अगेन आई मीट ट्रैफिक. ऑलरेडी हैव इट सीम्स. यार ट्रक वालों का भी रेस लगते हुए देखा. हैव यू? ओके, ही इज गोइंग राइट आई थिंक. भाई इसका देखो क्यों डर लगता मेरे को. ये भागे जाता है यार, कहीं भी लैग शो नहीं करता है. आई डोंट वांट टू पुश इट टू मच अनलेस नीडेड. वाज़न्ट नीडेड नाउ बट आई नीड इट फॉर यू गाइस. Fun sometimes, you know, driving a bit high frequency, you can say. That doesn't means that you will think if I'm in high frequency I can do anything, like I can just cut off this auto right here. No, you have to be in a logical high frequency. You must not think too much of yourself when you're giving yourself your fate to nature. So respect that. So yeah, according to my previous video as well, the mileage which I spoke about was 9 to 11 kmpl. It won't exceed that. चाहे आप जितना भी अच्छा चला लो, क्योंकि aggressively I just drove and लगभग उतना ही होता है. 10 ही इसका एवरेज है फिलहाल. एंड आई एम एट 35,571 kilometers. This is right after the 4th service I think, guys, and the car has been running very smooth and I have no issues with it as well. Otherwise, those who are going for this car, don't you know, put the mileage thing at the bottom of your list, because that's not gonna happen. It's very confident. You just maneuver as you like. स्टेयरिंग आपको सेडान सबसे हल्का मिलेगा. परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है पेट्रोल मॉडल में. That's what I'm saying, but it comes with a huge compromise that you'll get around 8 to 10 kmpl overall. तो फाइनल ये दिखाना था. आप लोग को याद है ये कितना था, आधे से थोड़ा ऊपर, तो कितना गिरा है और कितना यूज़ हुआ है. ड्राइव इन्फो में जाते हैं, because I had reset the drive info as well to trip A. It's 88 kilometers which I have driven on an average speed of 38 kmph. 88 किलोमीटर्स पे फ्यूल इन्फो जो निकल के आता है वो है 10.5 का, आप पकड़ लो. सो 10.5 इज द एक्चुअल माइलेज ऑफ दिस कार इन ऑल कंडीशंस. ठीक है, सिटी भी, हैवी ट्रैफिक भी. इनफैक्ट आई वुड लाइक टू ऐड कि हाईवे टाइम मेरा बहुत कम था, लाइक 10-15 मिनट होगा. एंड अगेन ट्रैफिक सिचुएशन ही आ गया था. Anyways, so the ultimate conclusion turns out to be that this car weighs around 1815 kgs to 1960 kgs. Now the 1815 variant is the 5-seater variants of XUV 700 and the 1961s are the 7-seater variants. So in regards to that, with a fuel capacity of 60 liters, Mahindra XUV 700 provides you with a mileage of 10 kmpl overall. You know, the mileage drastically decreases, especially if you are from a metro city and your daily conditions are bumper to bumper traffic. You will not achieve more than 10 kmpl. And to my experience,
you cannot achieve more than 8 kmpl if it's a very heavy traffic conditions. Now only if you're driving in highway conditions, your daily drive is on highways, you have 4 lanes everywhere, so only then you can achieve like 10-11 kmpl. Otherwise there's no way you can achieve more than 10 kmpl, especially in the petrol variants. So this was it guys, and hope this video might have helped you, and those who are going for this car, those who love this car, those who want to joyride this car, this is the perfect SUV in the market right now to give you all the combos, except for this one thing, that the efficiency can slightly trouble you. Other than that, there's no imperfections in this car. Everything is top notch. The quality is top notch. It's premium build. It's built for safety, which is a big concern in the automobile industry. So rest assured, the Mahindra XUV is like 10 out of 10. Anyway, so इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं गाइस. अगर आप चैनल पे नए हो तो डू हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच informative videos in the future. See you guys. Drink safe, drive safe, and ride safe. Bye bye.